Evening to all of you, dear aspirants. It's 7:30. It's 7, okay, 7 p.m. Exactly 7 p.m. So let us begin our evening session. संध्याकालीन सत्र की शुरुआत हम लोग अब थोड़ी देर में करने वाले हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी जुड़ जाएं शीघ्रतापूर्वक। और आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन हम करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों पर अभ्यास। डियर एस्पिरेंट्स, प्रीलिम्स में मात्र अब घंटों की बात है। 25 ऑफ मई संडे और आज 23 मई है। तो इस प्रकार से आप काफी अपनी तैयारी के अंतिम चरण में पहुंच चुके होंगे। अब तो केवल रिवीजन रिवीजन रिवीजन, लेकिन मेरी ओर से आपको यही सलाह है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, नो स्ट्रेस। और इतना कुछ आपने तैयारी किया है, पढ़ा है पिछले साल 1.5 साल के भीतर, वो सब सारे विषयों को अपने मस्तिष्क में आत्मसात कर लें। डियर एस्पिरेंट्स, आइए चलें, आज का ये सत्र हम प्रारंभ करते हैं और इसमें हम देखेंगे ऐसे ऐसे प्रश्नों को जो परीक्षा में संभावित हैं। कंसिडर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। नंबर 1 आयरन, नंबर 2 विटामिन ए, नंबर 3 कैल्शियम, नंबर 4 आयोडीन। How many of the above nutrients are typically added in food fortification program in India? A only 1, B only 2, C only 3, and D all 4. So, dear aspirants, what should be the answer to this MCQ? अब इस MCQ का आंसर क्या होगा ये आपने बताना है। So, the answer is, dear aspirants, इसका आंसर the answer is okay, all 4. Okay, D is the answer. Iron is commonly added to staple foods like wheat, flour to combat iron deficiency, anemia, dear aspirants. And option 2, vitamin A is added to edible oils to improve vision, health, and reduce deficiency. So, both these options are correct. Option 3 is also correct because calcium is fortified in some products, particularly milk and dairy alternatives, to support bone health. And option 4 is correct because iodine is added to salt to prevent iodine deficiency and related thyroid issues. So, all the 4 nutrients are commonly added. So, our answer should be all 4. That is, D should be the answer. Here comes a question related to FSSAI. So, which of the following statements about FSSAI's food fortification standards in India are correct? So, number 1 statement, FSSAI has established standards for fortified wheat flour. Second, FSSAI mandates labeling of fortified products with a specific logo. And the third statement, FSSAI only permits fortification for dairy products. So select the correct answer using the codes given below. A12 only, B23 only, C13 only, and D123. So dear aspirants, अब आपको बताना है। परशुराम कुमार जी गुड इवनिंग, कैलाश प्रसाद जी वेरी गुड इवनिंग। तो इस प्रकार से FSSAI से संबंधित इस प्रश्न पर आपका आंसर क्या होगा? सो A is the answer. First and second statements are correct because
FSSAI has established standards for fortifying wheat flour, गेहूं का आटा, with iron, folic acid and other nutrients. स्टेटमेंट 2 का जहां तक सवाल है, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि FSSAI mandates that 45 products must carry a specific logo, okay, plus F logo to help consumers easily identify fortified foods. और जहां तक स्टेटमेंट 3 का सवाल है, this statement is not correct because FSSAI permits fortification for a variety of foods including rice, milk and edible oils, not just dairy products. ये केवल जो दूध से उत्पादित वस्तुएं हैं उसी का केवल ये FSSAI फोर्टिफिकेशन नहीं करता है। अब यहां पर आप हमसे पूछेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है FSSAI का, तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डियर एस्पिरेंट्स, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है डियर एस्पिरेंट्स। और यहां पर आप देखेंगे कि ये अति महत्वपूर्ण है जहां तक हमारे देश का सवाल है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये काफी महत्वपूर्ण निकाय है और इसमें और भी तरह तरह की संस्थाओं का मेल है। सो डियर एस्पिरेंट्स, आपने देखा इस प्रश्न को भी। अब FSSAI के बाद एक प्रश्न हम और ले लेते हैं जो ट्रिप्स एग्रीमेंट से संबंधित है। ट्रिप्स एग्रीमेंट से संबंधित है, तो इस प्रश्न पर भी हम विचार कर लेते हैं डियर एस्पिरेंट्स। आइए देखें ये क्वेश्चन। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी हमारे सिलेबस में है और इस पर भी हमारा ध्यान जाएगा निश्चित तौर पर। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नंबर 1 कॉपीराइट, नंबर 2 पेटेंट्स, नंबर 3 ट्रेड सीक्रेट्स, नंबर 4 ट्रेडिशनल नॉलेज। So how many of the above each are explicitly protected under WTO TRIPS agreement? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड एग्रीमेंट से इसमें कितने संरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं? A only 1, B only 2, C only 3 and D all 4। एक बार फिर से ताकि आपका कंसेप्ट हो जाए। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नंबर 1 कॉपीराइट, नंबर 2 पेटेंट, नंबर 3 ट्रेड सीक्रेट एंड नंबर 4 ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इनमें से कितने WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट से एक्सप्लिसिटली प्रोटेक्टेड है? सो डियर एस्पिरेंट्स, इनमें से केवल 3 प्रोटेक्टेड है और ये है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो GI जिसको टैग कहा जाता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, पेटेंट्स, लेआउट डिजाइन्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ट्रेड सीक्रेट्स। सो डियर एस्पिरेंट्स, आवर आंसर इज ओनली 3। आवर आंसर इज ओनली 3। सो डियर एस्पिरेंट्स, अब इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज, दिस इज नॉट देयर। ट्रेडिशनल नॉलेज ये वहां इसमें शामिल नहीं है। द ट्रिप्स एग्रीमेंट एक्सप्लिसिटली कवर्स कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट एज टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। However, traditional knowledge is not specifically covered under TRIPS, though discussions about its protection exist at the WTO। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब एक यहां पर आपसे आप ये हमसे पूछ सकते हैं कि सर आखिर ट्रिप्स का मतलब
क्या हुआ और ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। सो डियर एस्पिरेंट्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ट्रिप्स का, और ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अंतरराष्ट्रीय समझौता है WTO के अंतर्गत। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, तो उसी के तहत ये ट्रिप्स है और इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस प्रश्न को भी आपने भली भांति देख लिया और समझ भी लिया। तो डियर एस्पिरेंट्स, एक प्रश्न और हम जब ट्रिप्स पे करेंगे तब ये चैप्टर आपकी पकड़ में आ जाएगा। डियर एस्पिरेंट्स, आइए देखें, और ये प्रश्न है, arrange the following treaties and agreements influencing India's IPR framework in the order of their adoption by India. Number 1, accession to Berne Convention. Number 2, the signing of the Paris Convention for Industrial Property. Number 3, membership in the TRIPS agreement. Number 4, ratification of the Madrid Protocol. So select the correct answer using the codes given below. A 2134, B 1243, और इसमें अरेंजमेंट 2134 is the answer. Paris Convention for Industrial Property, India adopted this in 1998 to foster international cooperation in protecting industrial property like patents and trademarks. इसके बाद बर्न कन्वेंशन हुआ। इंडिया ज्वाइंट दिस ट्रीटी इन 1928 टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑथर्स एंड क्रिएटर्स। ट्रिप्स एग्रीमेंट, इंडिया साइंड दिस एग्रीमेंट इन 1995 अपॉन ज्वाइनिंग द WTO, हार्मोनाइजिंग इट्स IPR फ्रेमवर्क विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। और इसके बाद मैड्रिड का प्रोटोकॉल 2013 में आया। 2013 में इंडिया became a member in 2013, simplifying trademark registration across multiple jurisdictions. So the correct chronological sequence, यानी काल क्रम के अनुसार सीक्वेंस 2134 ही है। डियर एस्पिरेंट्स, कल से क्लास फिर 7:30 बजे से ही होगा। सो 7:30 से ये क्लास हो पाएगा। डियर एस्पिरेंट्स, सो फ्रॉम टुमारो एक नोटिस हम आपको दे देते हैं, और फ्रॉम टुमारो क्लास एट 7:30 PM। तो ये आप याद रखेंगे, कल से ये क्लास 7:30 बजे संध्या में जो पहले होता था, तो उसी समय पर ये हम आयोजित करेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से ये क्वेश्चन हमने चुना है, और इसी तरह से अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिजीजेज, इम्यूनिटी, इस पर भी सवाल आते हैं। तो आइए देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजेन्स। एंटीजेन की क्या विशेषताएं हैं? सार्थक सर, इज देयर नेगेटिव मार्किंग ऑफ 2.0 और 1.5 मार्क्स? सो नेगेटिव मार्किंग जो होता है वो दैट इज 2 मार्क्स का नहीं होता है डियर एस्पिरेंट्स। तो ये आपको समझना होगा, 2 मार्क का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ओके, सो जहां तक नेगेटिव मार्किंग का सवाल है, तो उसको हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताते हैं। और प्रीलिम्स में ये नेगेटिव मार्किंग है, मेंस में तो होने का सवाल ही नहीं है। ओके, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 1/3 ओके ऑफ द मार्क्स assigned to that question is
डिटेक्टेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.66। ओके, ये 1.5 सार्थक नहीं है। ओके मिस्टर सार्थक। ओके, सो अब इसको हमें समझना है। इट मीन्स 0.66 marks are deducted for each wrong answer in paper जीएस। और जीएस 2 में क्या होगा? चूंकि वहां 2.5 है, ओनली 80 क्वेश्चंस आर देयर, सो 0.83 ओके मार्क्स इन पेपर 2। तो ये आपने इसको समझ लिया बिल्कुल, 1/3 ऑफ द मार्क्स। तो 1/3 ऑफ मार्क्स ए रॉन्ग आंसर ओके इन 0.66, और सी सेट में 0.83। ये आपने देख लिया डियर एस्पिरेंट्स। तो दिस इज दी ओके, दिस इज दी निगेटिव मार्किंग। ओके, जो आपने हमसे पूछा, यस सर इज देयर निगेटिव मार्किंग? यस देयर इज निगेटिव मार्किंग, बट इट इज नॉट 2.0। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। और यदि आप 25 को एग्जामिनी है तो आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना, और आप निश्चित रूप से यूपीएससी क्रैक करें, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे। फिर मेंस की तैयारी के क्रम में भी आप यहाँ इस चैनल पे उपस्थित हो डियर एस्पिरेंट्स। और यहाँ पे हम प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, एवरी डे एट 7:30, अभी 2-3 दिनों से चूंकि 7:30 बजे विद्युत बाधा उत्पन्न हो जाती थी, तो हमने 7 PM का समय चुना, बट कल से फिर वी विल बी ऑनलाइन एट 7:30। सो there is negative marking in UPSC prelims examination, and what is the scheme? For every incorrect answer, 1/3 of the marks assigned to that question is deducted. This means 0.66 marks is deducted for each wrong answer as far as GS paper 1 is concerned, and 0.83 marks in GS paper 2, that is commonly known as CSAT, Civil Services Aptitude Test. I hope it is clear to you. अब मेरा पूरा विश्वास है कि आपने जो प्रश्न पूछा तो वो स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया। आइए देखें एंटीजेंस पर। Which of the following are characteristics of antigens? Number 1, antigens are substances that trigger an immune response. और दूसरा, antigens are always harmful to the body. Third statement, each antigen is specific to a particular pathogen. और fourth, antigens can include proteins, polysaccharides, or toxins. So select the correct answer using the code given below: A13, B134, C24, or D 1, 2, 3 and 4. So dear aspirants, अब आपने बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा. So the correct answer to this question is 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. 2 is not correct because antigens are not always harmful to the body. While many antigens, such as those from pathogens, can cause disease, others like harmless proteins in vaccines stimulate protective immune responses without harm. So our answer is 1, 3 and 4. So antigens are substances that can trigger an immune response. When introduced into the body, they are recognized as foreign by the immune system, prompting the production of antibodies or activation of immune cells. Second statement is also correct. Second statement is incorrect. Third statement is also correct because each antigen is specific to a particular pathogen. This specificity allows the immune system to identify and target specific invaders
इंश्योरिंग ए टेलर्ड रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस। और चौथा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि एंटीजेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स और टॉक्सिन्स। फॉर एग्जांपल, bacterial cell walls contain polysaccharides, while toxins released by bacteria are protein-based antigens. So our answer should be 1, 3 and 4 statements are correct statements. तो इस प्रकार से डियर एस्पिरेंट्स, आपने देखा कि एंटीजेंस और पैथोजेंस से संबंधित प्रश्न को भी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और आप निश्चित रूप से इस प्रश्न पर पकड़ बना चुके हैं। एक और प्रश्न इम्यूनिटी पर हम लेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी? INNATE, इनेट इम्यूनिटी का विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, it provides a rapid response to pathogens. Is it correct? You have to investigate into it. Second, it has memory and adapts to specific pathogens over time. The third, it includes physical barriers like skin and mucous membranes. और चौथा, it is highly specific to particular pathogens. So select the correct answer using the codes given below: A13, B24, C123 and D123 and 4. So dear aspirants, what should be the answer to this MCQ? Now let us find out. So 1 and 3 are correct. The second statement is incorrect and fourth statement is also incorrect. First statement is correct because innate, INNATE, innate immunity is the body's first line of defense and provides a rapid and immediate response to pathogens. It acts within hours of infection to neutralize or eliminate invading organisms. So जो भी आक्रमणकारी जीव जंतु हैं, तत्व हैं, तो उनको वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है इनेट इम्यूनिटी न्यूट्रलाइज करने के लिए. डियर एस्पिरेंट्स, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इनेट इम्यूनिटी डज नॉट हैव मेमोरी and cannot adapt to specific pathogens over time. These characteristics are a part of adaptive immunity which improves with repeated exposure to the same pathogen. तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, और क्यों करेक्ट है ये हम बताते हैं. Innate immunity includes physical barriers such as the skin, mucous membranes, and chemical defenses like enzymes and antimicrobial peptides. These barriers prevent pathogens from entering the body. Statement 4 is incorrect because innate immunity is not highly specific to particular pathogens. Instead, it recognizes and responds to broad patterns associated with pathogens such as lipopolysaccharides on bacterial surfaces or viral RNA. So our correct statement is 1 and 3 only. That is A is the answer. Yash Sharma is asking, sir, are these probable questions for 2025? Okay, dear Yash Sharma ji, I should not say like that. Okay, but most important questions. Okay, selected questions, I should say. Selected questions. And if you are preparing for the UPSC 2025 exam, you must have prepared well, okay, to perform well. So आपको पता होगा कि questions कहां से आएंगे. Okay, probability, ये वेस्ट इंडीज का, if you are aware with the cricket, a little bit ABC of cricket, you might be knowing regarding the pitches, cricket pitches of the West Indies. Uneven bounce, not predictable. So similar is the case with the UPSC, dear aspirants. Okay, nobody can say, nobody can predict. It's unpredictable. So I should not say probable, but these questions are important.
ओके, क्या होने वाला है ऑन 25th? टुमारो इज 24th। कल भी हम इस पे हाईलाइट करेंगे। टुडे आपने जब छेड़ा है तो आपको बताएंगे कि विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। डियर एस्पिरेंट्स, WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, GI टैग, dear aspirants. Okay, most importantly, the national parks, the biosphere reserve, TR tiger reserve, elephant reserve, such areas must not be overlooked. Then, wherever there is some okay event, the geographical position okay will be correlated with map, that is the place finding on map, the boundary, okay, the location of that place, like Gaza Strip, that is most common, Mediterranean, Caspian, Black Sea, okay. Now if something was reported with regard to national or international events in the newspaper, that is the Hindu, okay, you may find a question related to that. The Indus Valley, the Vedic period, okay, Buddhism and Jainism, these are the most important areas. Ashoka pillars, so many times they have asked questions. Now the smaller, okay, kingdoms, Vakatkas, okay, Kakatiyas, okay, Chola, Chera, Pandyas, Gurjar Pratiharaj, they may put a question. Pala, Pallavas, okay. So, dear aspirants, you should go into the details. They may put a question. Art and culture, that is also very, very important, dear aspirants. So many temples in our country. The most important temples, Shaivite, Vaishnavite, Nayanars, Alvars, they may put a question. Okay. As far as the medieval Indian history is concerned, they put question related to Sufism. Sufism. Okay. So that should not be spared. Then the Guru Bani and the 10 Gurus of Sikh religion, Bhakti Andolan, that is also Bhakti movement. Then so many questions coming from the modern Indian, that is Indian national movement. So you must have gone through that. The prime is, that is petition, protest, and okay, prayer, petition, and protest. These three P's of moderate liberal okay leaders. And then after Gandhi, and you find NCM, non-cooperation movement, CDM, civil disobedience movement, then okay, RTC, round table conference, and then QIM, quit India movement. So just you take these most important events in a chronological order, dear aspirants. They may put a question like that. Okay, so these are, as far as history is concerned, these are the questions. Now geography, okay, you should note down the most important geographical places which were in the news. You should not spare, you should not skip, because those places are very, very important. Rock, volcano, cyclone, that is common, dear aspirants. Earthquake, common. The soil, types of soil in our country, and the produce, okay, these are very, very important. Millets, International Year of Millet, okay, that was celebrated. So you may find a question. What's the importance? Now the trade, the research institutes, such type of questions you may find. Okay. Now economy, RBI governor has been recently changed. So what is monetary policy committee? Okay. There it's meeting by monthly meeting, and the result, okay, CRR, now RR, repo rate, triple R, reverse repo rate,
What will be the effect as far as inflation is concerned? Now, they may also put a question related to wholesale price index, okay, consumer price index, okay, something like that. Then rural banks, regional banks, these are the hot areas from where you may find questions. So, dear aspirants, now the world scenario recently, the Trump administration took so many decisions with regard to tariff increase. So what was the impact on Indian trade? So dear aspirants, अब इस प्रकार से वो आप क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं. So similarly, you will find questions in science and technology as far as C61. So recently, it made its failure. It could not get success. Dear aspirants, they may put a question. Earth observation satellite. Then PSLV and GSLV, geostationary and geosynchronous. Now, science related, so many questions are there. Then decipherment of the Indus Valley script. Okay. Now, the water diplomacy. Okay. Water, because IFS people, aspirants, they also appear to this examination. So, water diplomacy, that is a new word coined by the Hindu National Daily. जल की जो कूटनीति है, water diplomacy. So, Indus Valley water and Shimla agreement. So, Shimla agreement and Indus Valley agreement. So, these two are also in the air. So, dear aspirants, then you will find polity related so many important questions. Recently, the apex court, that is Supreme Court, passed an order with regard to the president and governor. Okay, till how many days, okay, or months they will keep a bill for their consideration. So the apex court has passed an order, but you will not find that thing in your prelims question paper, because that is a disputed matter. Okay, that is a disputed matter. So dear aspirants, अब ऐसे ऐसे प्रश्नों पर आप देखेंगे, विचार करेंगे, और ये क्या कैलाश प्रसाद जी, गुड नाइट सर. गुड नाइट करने की क्या जरूरत है, यू लीव, आप चले जाइए, गुड नाइट हो चुका है. जो सुन रहे हैं, जिनको परीक्षा देना है, तो उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप सफल हो, यही गुड नाइट और गुड मॉर्निंग है. डियर एस्पिरेंट्स, सो आई वाज डिस्कसिंग नाउ at least 10 to 15 questions or more than that you may find related to current events. अब करंट इवेंट में क्या हो सकता है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है. अब विश्व के मंच पर, ओके, रसा यूक्रेन वॉर और इजराइल गाजा, फिलिस्तीन पैलेस्टाइन, ये तो चल रहा है. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 22 अप्रैल की घटना हुई, और जो 27 टूरिस्ट्स वेयर मर्डर्ड, किल्ड, तो वो उसका इंपैक्ट, और उसके बाद फिर किस तरह से अब उसमें जो हमारा नेवल एयर, ओके, इंपॉर्टेंट आर्सेनल है, वेपन्स है, उस पे वो सवाल पुट कर सकते हैं. और फिर जो सीडीएस का रोल है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीडीएस, ये कब से स्थापित हुआ, ओके, और सीडीएस का किस प्रकार से लाइजनिंग है तीनों सेनाओं, ऑन द थ्री विंग्स ऑफ, ओके, जैसे इन्फेंट्री, दैट इज आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स. तो ये सब बिंदुओं पर आप सवाल देख सकते हैं. पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड आईआर, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. और पार्लियामेंट में बहुत से ऐसे बिल आए हुए हैं जिनका इंपैक्ट पड़ा है, जिनका प्रभाव पड़ा है. तो वैसे बिल्स पर भी एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं.
the role of deputy speaker, okay, that is very important. Then vice president, उनको वो टारगेट कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के संबंध में हु चेयर्स दी आरएस राज्यसभा, और फिर वो बिल के बारे में भी पूछ सकते हैं कि किस प्रकार की मेजॉरिटी किस बिल पे चाहिए, मनी बिल क्या है, तो इस तरह के भी प्रश्न वो पूछते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये भी वो टारगेट करते हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, इस प्रकार से यदि आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन कर चुके होंगे, अब तो घंटों की बात है, तो इस मनस्थिति में आप हैंकी पैंकी नहीं रहे, मन को, चित्त को स्थिर रखें और इट्स बेटर योगा कर लें और बिल्कुल काम एंड क्वाइट रहें। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि आपने हमसे पूछा प्रोबेबल क्वेश्चंस, तो उसको हमने आपको बताया। टुमारो सैटरडे है, एट 7:30 हम इन्वायरमेंट और सी सैट से संबंधित प्रश्नों पर विचार करेंगे। सी सैट के 10 सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताएंगे और निश्चित रूप से आपका ये सफलता के लिए अति आवश्यक ये होगा। डियर एस्पिरेंट्स, ऑन संडे वी टेक अप करंट इवेंट्स, और संडे के शाम में हम लोग जो परीक्षा होगी उन प्रश्न पत्रों पर विचार करेंगे। सो दिस इज ऑल विथ यू टुडे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन सच ए गुड नंबर। लेट मी से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सभी को हमारी ओर से शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।